So as we were talking about the mechanism of action of the parathyroid gland and its actions upon the metabolism of the calcium, so it maintains a very narrow range of calcium by acting upon the bones, kidneys and to some extent upon the intestines, and it controls the level of the calcium in between the normal range as well as controls the phosphate levels in the blood. So the action of the parathyroid gland upon the level in maintaining the level of the calcium is by breaking down the bone where most of the body's calcium is stored and cause the release of the calcium from the bones. It increases the gastrointestinal ability to absorb the calcium from the food by certain receptors of the calcium in the intestines, and it increases the kidney's ability to retain calcium that would otherwise be lost in the urine. So it also activates vitamin D3's active form from the kidneys to act upon the intestine to absorb the calcium. So this is the best depiction of the action of the parathyroid glands, calcium sensing receptors. जब calcium reduce हो जाता है blood में तो इसके calcium sensing receptors release करते हैं parathormone that acts upon bone, kidney and intestine and raises the calcium level in the blood by resorption from the bones by increasing reabsorption of the calcium and activating vitamin D3's active form, and in the intestine increases the calcium reabsorption from the intestine. So at the end of its action, calcium level is raised in the blood. So this is the action of the parathyroid hormone, but in the maintenance of the phosphate levels, it reduces the reabsorption of the phosphate from the kidneys at the same time when it is increasing the reabsorption of the calcium in the kidneys tubules. So this picture depicts the form of the hierarchy for the action of the parathyroid hormone. When the plasma calcium level is reduced, it increases the secretions of parathyroids, reduces the plasma phosphates and reduce phosphate renal reabsorption, increases the activation of vitamin D3, increases the intestinal absorption of the calcium and increases bone resorption. Both of these actions cause plasma phosphate levels to increase, plasma calcium levels also to increase, urinary phosphate increase हो जाता है. Similarly calcium level भी इसका control हो रहा है और phosphate level भी body का control हो रहा है. Now action on the bone formation भी है. To some extent parathyroid hormone bone formation में part play करता है. तो कुछ books लिखती हैं कि इसका dual action है. It has more action in resorption of bone as compared to the formation, जो कि lesser action है in formation of bones. It increases osteoblastic number, osteoblastic activity and formation of the bone and the collagen synthesis. It also increases alkaline phosphatase activity और इस enzyme की activity के साथ ये mineralization of bone में part play करता है. Increase local growth factor, insulin growth factors, insulin like growth factors and transforming factors से क्या होगा, bone formation में help मिलेगी. But this mechanism of action is least one as compared to the resorption of the bones. कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल से, जिससे कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होकर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है इन द ब्लड. सिमिलरली इट इंक्रीज क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. दिस इज द सेकेंडरी एक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन्स. इट रिड्यूसेस द फॉस्फेट reabsorption from the proximal tubules. Similarly increase proximal tubules 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी. ये वो एंजाइम है जो कि विटामिन डी को विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देगा. इट इंक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली वाया 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम फॉर विच the level of the calcium has to be maintained in the normal narrow range between 9 and 11 milligram per deciliter. These functions are to stimulate the growth, release of the hormonal secretion, that is release of the insulin is controlled by the calcium level. Similarly other hormonal release कुछ extent तक muscle contraction is controlled and helped by the calcium levels.
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये फोर्थ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। नर्व फंक्शन ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में इसका रोल है। नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द सम एंजाइम्स, वो फैक्टर है कुछ एंजाइम्स का और कुछ रिएक्शंस का। ट्रांसपोर्ट करता है आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेंटेन्स द रेगुलर हार्ट बीट, उसकी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करता है इन द हार्ट। और इसके लिए हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया में द रेट ऑफ द रिदम of the heart changes, or it can be, hypocalcemia can be lethal to the extent कि muscular contractility कम हो जाती है, muscular spasm शो होते हैं, it can result in respiratory spasm and it can result in bradycardia and it can be dangerous to the life. So it maintains the calcium levels normal range के अंदर, ताकि हमारा कैल्शियम का मेन मेटाबॉलिज्म along with the phosphate metabolism कंट्रोल रह सके।